Assalamu alaikum everyone, this is Sapahat and welcome to my live session. So first of all, let me go on different platforms and see who's live with me, and in the meantime, those of you who are watching, आप मुझे बता सकते हैं आप कहाँ से log in करें. Are you from Pakistan, are you from abroad, or are you from any other province or district of Pakistan? So जब तक आप ये चीज़ लिखते हैं, I'll just be back in a jiffy. And in the meantime, do let me know what you think about today's session. Cause today's topic, it's pretty much clear, but you can guess what I plan to talk about. So let me just check myself on other platforms and then I'll get back to you. So we still have 1 minute to go, and then I can start with the session. Okay, so I can see myself live on different platforms, and let's see. Okay, so it's 7 already, and I've just planned to start with my session without wasting any time. So you know what, अक्सर आप लोग at times feel करते होंगे, you might at times catch yourself caught in other people's drama. So this is what I plan to talk about, कि when you find such situations, how can you come out of those drama, or how you can prevent yourself from getting into the affairs of other people. So आज मैं आपको जो basically certain tips बताऊंगी जिनके through जो है you will be able to restrain yourself without involving into other people's life. वो एक term हम इस्तेमाल करते हैं, mind your own business. So this is exactly what I plan to talk about, how as an individual you can mind your own business. So coming back to my topic, let me just start with it. So सबसे पहले तो आपने ये चीज़ देखनी है, you need to avoid gossip and unsolicited opinions. अब आप जो है अक्सर देखते होंगे, like if you are in a working setup, you might be noting that there is every kind of talk going on. और अगर आप present day scenario को भी देखें, अगर आप अपनी आम रूटीन में भी देखें, तो there is so much drama and gossip and all kind of opinions going on. So अपने आप को आपने ऐसी जो सूरत हाल होती है या ऐसी सिचुएशन होती है उससे अलूफ रखने की कोशिश करनी होती है. काजी नदीम अशरफ, वालेकुम अस्सलाम. सो द बेसिक थिंग इज़ कि भाई you need to keep yourself restrained from everything, ख़ास तौर पे जो gossip है और unsolicited opinions है, क्योंकि it's not your concern. Like those people who are into gossips, who are into unsolicited opinions, it's not going to help. उससे जो है, like you have to focus on your goals rather than getting yourself or meddling yourself into unsolicited opinions या gossips, क्योंकि it does not help in real life. वक्ती तौर पे तो शायद you might feel good, okay, आपको जो है ये gossip सुनने को मिली है and you want to be a part of it, but in the long run, और वैसे भी ethically भी अगर देखें तो it's not good, it's not part of our code to get into unsolicited opinions या फिर into gossips. It's not something good जो आपको overall help करेगी. So for that very reason you need to avoid gossips. अच्छा, सेकेंडली फिर आप इसमें जो है क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज फोकस ऑन योर गोल्स, क्योंकि व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन योर गोल्स तो ऑब्वियसली यू वोंट हैव दैट टाइम, और वो इतना विला टाइम तो किसी के पास नहीं होता कि यू जस्ट लेट गो ऑफ एवरीथिंग यू आर डूइंग एंड यू जस्ट eavesdrop, or you just try to listen to unnecessary things. So don't get into these things. Okay, I can see many people at the top of my screen. Thank you for joining, and Rana Wali, thank you so much for joining and watching this session, and thanks for your compliment as well. So just focus on your goals, और जब आप अपने goals पे focus कर रहे होंगे तो still you won't have that time कि भाई आप जो है अपना जो है time waste करें या you get into other people's conversations या meddling with the affairs जो आपको concern नहीं करते. So the second thing is you have to focus on your goals. Sayyed Abdul Rafi, thank you so much for joining and watching. Long time you have joined my session after quite some time. And Kashif Ijaz, walaikum assalam, and thank you for joining my session. So second is this,
अच्छा, थर्ड इसमें ये आ जाता है, यू नीड टू रिस्पेक्ट पर्सनल बाउंड्रीज। अब आप अगर जो है लाइक एवरी वन हैज़ देयर ओन पर्सनल बाउंड्रीज, आपकी अपनी पर्सनल बाउंड्रीज होंगी और लोगों की अपनी पर्सनल बाउंड्रीज होंगी। नाउ इंस्टेड ऑफ के भाई आप जो है यू डोंट रिस्पेक्ट बाउंड्रीज और आप जो है एकदम कूद पड़ें, ओके यू माइट हैव अ वेरी गुड हार्ट एंड you might even want to help people, but then not everyone is looking for your opinions, or like not everyone wants your advices. So उसमें क्या होगा, if you don't respect people's boundaries, तो you might end up meddling with their affairs, their private lives, and also you might draw sheer criticism as well, because not everyone knows कि भाई आप जिस मकसद के तहत कर रहे हैं it's a very pure मकसद and you don't have any incentive or you don't have any ambition involved with that. Mohammed Adil, thank you so much for joining and watching, and okay, thanks for your compliments as well. So you have to respect personal boundaries as well. अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ ये आ जाती है, like how you can mind your own business is that you have to let people make their own choices. Now आपके जो है intention might be very pure, but not everyone knows your pure intentions. So rather than कि भाई आप जो है किसी पे जो है कोई बात थोप दें, या just say कि you are giving someone a piece of advice and you think it's a very it's a very genuine piece of advice, but not everyone wants to hear that advice. So rather than कि किसी को ये feeling हो कि वो आपको बता कर पछता रहे हैं and they feel regretful, या उनको ये फील हो कि भाई आप शायद अपनी बातें उनके ऊपर इम्पोज करें, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि यू कैन ऑलवेज आस्क देम, गिव देम सजेशंस एंड देन लीव इट टू देम टू मेक चॉइसेस, क्योंकि हर एक ने अपनी लाइफ में कुछ चॉइसेस जो है बनानी होती हैं. नाउ ऑब्वियसली दोज हु आर एडल्ट्स, they do not want to listen to other people's opinions or suggestions. They want to make their own choices. But yes, जो young लोग होते हैं या जो बच्चे होते हैं या those who are growing into adults, they are always seeking suggestions and looking for people's advices. And then there is another lot who are experienced, but they have a growth mindset and they are looking for suggestions from people जिनकी बातों में कोई दम होता है, जिनसे पता चलता है कि ओके भाई ये जब मुंह खोलेंगे तो कोई साउंड एडवाइस आएगी. इट्स नॉट दैट दे आर गोइंग टू ओपन देयर माउथ एंड समथिंग else is going to come out, something that's irrelevant. Shams Pakhtun, thank you so much for joining and watching. Ashok Kumar, thank you so much for joining and watching. And Sajad Rasool, thank you so much for your compliment as well. So let other people make their choices. This is another thing which you can do. क्योंकि everyone, people grow through their experiences. We all learn through our experiences. हमारी लाइफ में अच्छा हो हम उससे सीख रहे होते हैं, हमारी लाइफ में बुरा हो हम उससे सीख रहे होते हैं. हमारे इर्द गिर्द जिन लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा होता है हम उनके एक्सपीरियंसेस से भी सीख रहे होते हैं. सो एवरी वन इज़ प्रोन टू they want to learn through their experiences, and then there are people who learn through other people's experiences. So ये जो है ना यानी रेशो जो है ना डिफ़र करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. देन इसमें आप एक और जो चीज़ कर सकते हैं, हाउ यू कैन माइंड योर ओन बिजनेस इज़, don't judge how people spend their time. Now everyone has their own way of spending time. You might like reading books, or you might like conversing with people to learn about different things, but then there are many people who would just like to just do their 9 to 5 job and then they won't like to do anything else. Obviously जब 9 to 5 job भी कोई कर लेता है तब इतनी एनर्जी ही नहीं रहती. एंड देन इट ऑल डिपेंड्स आप किस वर्किंग सेटअप में हैं. कॉज व्हाट आई फील इन पाकिस्तान, मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मोस्टली जो ऑफिसेज हैं, ख़ास तौर पे आई एम नॉट गोइंग टू कोट एनी पर्टिकुलर ऑफिस, बट येस उधर जो है स्टिल आपका जो काम है वो वक्तों पे वाइंड अप हो जाता है. बट इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस येस वक्तों पे काम वाइंड अप नहीं होता है एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन. एंड देन जब आप घर आते हैं यू डोंट हैव दैट एनर्जी कि आप कोई और टाइम जो है ना किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकें. बट देन देर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस या देर आर मैनी पीपल हु रन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. कॉज अब जो ज़माना है वो AIs का ज़माना है एंड मोस्ट वर्क यू कैन गेट इट डन बाय
AI, you have different bots and they can do those work and you can spend your time elsewhere. But the thing is, you don't have to judge people just on the pretext कि वो अपना time किस तरह spend करते हैं. But then, if you have plenty of time, you can engage yourself into very productive activities rather than just, wheeling it away without making it productive. Okay, I have Ashok Kumar. Ashok Kumar, you're saying everyone has own way of spending life. You choose great topic. Thanks. Okay, thank you so much, Ashok Kumar. Thanks for your compliment. I try to choose, topics which are need of the time and which add some value into people's life. Otherwise, there are so many other topics which I do wish to discuss, but then it's not relevant. It's वो again जो है ना, it won't add value into people's life. It would be more of gossip, and I don't like gossiping, and I want people to have value in their life, जो कि वो जो है रिजॉइस भी कर सकें और उससे जो है अपनी ज़िंदगी को मायने भी दे सकें. ओके, देन जो है अगेन हाउ यू कैन माइंड योर ओन बिजनेस इज़ दैट डोंट मेडल इन कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आरंट योर्स. ये अगेन वही बात आ जाती है कि भाई व्हेन यू पुट योरसेल्फ इनटू सिचुएशंस जिसमें आपकी ज़रूरत नहीं है, यानी खामखा आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लो उनमें, तो ये भी जो है again you are not minding your business, you are meddling into other people's affairs, because not everyone is going to welcome you, or when you as a third person are meddling with their affairs or their conflicts, they're not going to like it, or at times वो एक sheer criticism के form में भी आ सकता है. But then there are many people who meddle into affairs with someone inviting them into their affairs, and then वो जो उसमें suggestions देते हैं, their suggestions are genuine. So उसमें जो है you have to, as a person, as a third person, you have to be impartial. Like if I meddle into anyone's affair, it would be by invitation, and then my concern would be to act as an impartial person without judging the other person, or without posing or imposing whatever I think, whatever suggestions I have. क्योंकि when you want to resolve a conflict, you have to become an impartial person. You have to be more of that person who listens rather than passing judgments, and you have to listen to everyone, not just one party जिसने आपको invite किया होता है. You have to listen to both parties, या जितनी भी parties involve हैं, आप उनकी बातें सुन के फिर उसके basis पे जो है अपनी judgment form करते हैं. You don't just हवा में कहते हैं कि ओके चूँकि ये जो एग्री पार्टी है ये मेरी फ्रेंड है तो आई हैव टू साइड विद हर और साइड विद हिम. So you have to your role is very difficult, and it's a very responsible one as well. Okay, Qazi Nadeem Ashraf, you're saying important topic of daily life. Yes, it's an important topic of daily life. Zamir Rodhani, वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, फिर इसमें ना एक और जो चीज़ आ जाती है वो ये आती है कि यू हैव टू फोकस ऑन योर वेल बींग एज वेल. चलें जी, आपका और लोगों के साथ तो कंसर्न है कि आप उनकी वेल बींग पे फोकस कर रहे हैं, बट येट एट द सेम टाइम आपका अपनी भी जो वेल बींग है दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. बिकॉज इफ़ ऑल द टाइम यू आर एड्रेसिंग पीपल एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर हेल्थ, या अपनी वेल बींग पे आप फोकस नहीं करें, तो देन यू आर गोइंग टू बी द वन हु इज़ गोइंग टू सफ़र. So you have to focus on your well-being too, because at times as an individual, as a human, you too need catharsis. और वो catharsis आप किस तरह करते हैं, you better know, you would be better knowing about different approaches कि किस तरह आप catharsis कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी well-being पे तवज्जो दे सकते हैं, क्योंकि that is also very important. अदनान मलिक, वालेकुम अस्सलाम. Okay, then one more point is, as an individual, always try to keep private conversations. Like private conversations, when I say about private conversations, it's that like if someone is confiding in you, so rather than कि भाई आप उनकी बात को आगे कोट कर दें या आगे जो है कोई और बयान कर दें, so it's always better to keep it private, keep it secret, so किसी की भी जो है ना दिल आज़ारी ना हो, या किसी को भी ये ना हो कि भाई चूँकि मैंने ये बात की थी तो इसलिए ये बात जो है इस तरीके से जो है कोट की गई या यही बात कोट की गई. सो आपने जो है ना योर कन्वर्सेशंस विद पीपल, दे नीड टू बी
secretive, they need to be private. क्योंकि when you respect the other person's private conversation, तो it builds a trust, and trust is the basic thing जो कि हेल्प करती है लोगों को आपके साथ कम्युनिकेट करने में. So if people approach you, they want to communicate with you, that's the simple thing कि they trust you. So वो जो trust होता है, never break that trust. But yes, बहुत सी ऐसी conversations होती हैं which you as a professional person, as an individual, you too need people to talk out. So वो जो है that you can talk out with your own professional जो आपके colleagues होते हैं, क्योंकि when those people are in that particular field, so they are able to understand कि what you have to share, या यह है कि if you need some kind of professional opinion तो फिर आप शेयर करते हैं. Otherwise in regular routine you just keep the conversation private, and that's a trust between you and the other person. So एक ये चीज़ हो गई which is very important. And then then इसमें एक जो सबसे important thing है ना, when I say कि you have to mind your own business, that is never assume कि you know better than others. Cause जो बंदा जो है जिस पोजीशन से गुजर रहा है, या जिस पेन से गुजर रहा है, या जिस अजाब में मुब्तला है, that person would be knowing it better himself or herself. So आप अगर जो है एज अ थर्ड पर्सन आप ये एज्यूम करके बैठ जाओ कि जी आपको बेहतर पता है और दूसरे को नहीं पता, तो डोंट थिंक दैट, कॉज यू आर द वन हु इज़ लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, नॉट द अदर पर्सन. कॉज बाज़ लोग जो है आपसे बात सिर्फ जो है ना मज़े के लिए करते हैं, just think they have this thinking at the back of the mind कि okay, if we are going to say this thing, how is this person going to react on this, and if we say this, and then what's going to be the reaction. So आप जो है अपने उस you have to speak, as the other day I was speaking कि जो words है they matter a lot, whatever words you're communicating, so your communication matters a lot. So in the same way, when people are they trust you, and they confide in you, and they pose certain questions in front of you, so without being judgmental, without assuming you know best what's best for them, you can always give your suggestions. But it's a two way communication जो है वो हमेशा two way होती है, it can't be one way. So if all the time I'm talking and I am trying to put these things in your mind, and you do not reciprocate back, so उस कन्वर्सेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा. So जो कन्वर्सेशन जो फ़ायदेमंद होती है उसमें it's a two way process कि I say something, and then from the other end you are adding something to it कि okay, this is right, this is wrong, and this is my opinion, and we feel this way. So this is the way जिस तरह communication होती है. So never assume कि what you know is best for others. Adnan Malik, I need a suggestion as I am a farmer and growing peanut with other crops also. I want to eradicate the role of middleman. How is it possible? Can you suggest, please? Okay, I'll answer your question at the end of the session. I just have one more point, so let me just cover that point, and I'm going to answer your question. Okay, then इसमें एक और जो चीज़ है which is very important, that is learn to say no when you have to say no. क्योंकि if you're just going to be a yes person, तो yes person is not it's not something which is going to help you in the long run. So there are times when you have to say no. हर एक की एक certain capacity होती है किसी भी चीज़ की, चाहे इनकार करने की चाहे yes करने की. So you have to learn to either say yes or either say no, and that is again very tactic, and but that that's an art. Saying no is an art. You have to learn to say no, क्योंकि अगर आप no नहीं करना सीखेंगे तो then जिस तरीके का सोसाइटी है, जिस तरीके के लोग हैं, और जिस तरीके से जो है फास्ट पेस डेवलपमेंट हो रही है इन द डिजिटल वर्ल्ड, so लोग आपको जो है ढूंढ के निकल जाएंगे. So you have to there are certain elements in your character जिसको आपने अपनाना होता है according to time, and then there are certain other elements जो कि आपने छोड़ने होते हैं, that is also according to the need of time and situation.
So these are the things which I had in mind and I just wanted to discuss these things with you. क्योंकि जब हम बात करते हैं हैं माइंड योर ओन बिजनेस की, तो these are I think these are the basic things जो कि आपकी लाइफ में या किसी की भी लाइफ में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे. एंड नाउ if you're satisfied with today's session, you can let me know via your emojis or okay, thank you so much for all these hearts and thumbs up coming up my way. So thank you. And Adnan Malik, आपका जो question है, the thing is that you don't need a middleman. So if you are a farmer, so you have to make rightful connections with market people. आपका अगर प्रोडक्ट पीनट्स का है या उसके साथ कोई क्रॉप्स का है, तो आप मार्केट जाएं. मार्केट में जो डायरेक्ट लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके जो पीनट है वो आप ऑब्वियसली किसी जो है मंडी पे जाकर सेल करते होंगे. तो मंडी में सेल करने के लिए गो आउट, अब खुद से जाएं, किसी बंदे को बीच में डाल के उसको पैसे ना दें कि भाई वो मार्केट में जाए और जाकर मंडी में आपका जो है पीनट बेचे या आपकी दूसरी क्रॉप्स बेचे. जब आप मार्केट में खुद जाएंगे तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो कि आपका प्रोडक्ट बाय करना चाहेंगे. देन अगेन आपने अपने प्रोडक्ट का एक एनालिसिस करना है कि हाउ गुड इज़ योर प्रोडक्ट. आप जिस उसमें मंडी में जा रहे हैं, उस मंडी में और कितनी तरह की मूंगफली आ रही है और आपकी मूंगफली में और जो बाकी लोगों की मूंगफली है उसमें क्या फ़र्क है. अगर आपको ये फील होता है कि भाई आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो देन यू कैन ऑलवेज टेक द अमाउंट एज पर योर मूंगफली या अदर क्रॉप्स. एंड देन यू डोंट हैव टू पुट इन अ मिडल मैन, क्योंकि जो मिडल मैन होते हैं वो तो अपना कट रख लेते हैं और बाकी जो मंडी में जिनको आप सेल कर रहे होते हैं वो अपना कट रख लेते हैं. तो दोनों जब अपना कट रख लेंगे तो आपको तो कुछ भी नहीं मिलेगा. दो यू आर द फार्मर और आपकी ज़मीनें हैं और आपकी फसल है और आपका फ्रूट है, तो जो ओनर है उसको जो है अपना फ्रूट का कोई फल नहीं मिलेगा. रादर जितने ज़्यादा आप जो है एक्स्ट्रा लोग रखेंगे तो सारा फल और सारा जो बेनिफिट्स हैं वो ही कंज्यूम कर लेंगे. सो माई सजेशन फॉर यू इज़ कि यू गो आउट इन टू द मार्केट, डू द मार्केट रिसर्च, सी के कौन से लोग जो है आपका प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हैं. एंड देन अकॉर्डिंगली इफ़ यू फोकस ऑन दी पैकेजिंग एंड एवरीथिंग, तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे दामों में बिक सकता है. दिस इज़ माई सजेशन फॉर यू. ओके, एंड देन अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो देन यू कैन ऑल्सो आस्क योर अदर क्वेश्चंस एज वेल. एंड इफ़ यू वांट अ होल लिस्ट ऑफ टिप्स regarding this particular suggestion of yours, तो I can do a whole session आपके पीनट और क्रॉप्स पे and how to avoid middlemen. Okay. So this is all and I can see you. Okay, you're most welcome, Adnan Malik. अच्छा जी, I can see someone at the top of my screen and I'll try to take you live on camera. और अगर आपने live आना है तो आप आ सकते हैं, and if you want to decline it's totally up to you. Okay, thank you so much for all these smileys and emojis. Let's see. So I'm trying to add you a normally live on camera. So if you want to add something regarding the topic, you can add something in the topic. या अगर आपने कोई और बात करनी है तो you can कोई भी बात आप कर सकते हैं. And you people can also share your experiences regarding meddling into other people's affairs. Yeah, how you people have experienced minding your own language, your own business, not English. So you have declined, no issues. I have another one. I have Kadina Mashraf. I'll try to add you or अगर after next table है तो then you can come live or else आपका भी हो सकता है drop हो जाए. So still adding. I think there is some issue regarding the next table नहीं है. Okay, no worries.
So आज maybe it's not possible to add the people live due to the I guess instability in net, but no worries. So inshallah, I'll meet you again on Wednesday, or then I'll have another topic and we can discuss another topic. And in the meantime, अगर आपको भी कोई topic हैं या आपको कोई suggestions हैं which you want me to discuss, I can discuss those in the sessions as well. तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।